Hello viewers, a very warm welcome back to Defense. In this video, I am going to discuss GATE 2022 electronic solutions from the subject electrical and electronic measurements in this series of GATE 22 electrical engineering solutions. So two questions came from electrical and electronic measurement subject, one of 1 mark MCQ and another of 2 marks numerical answer NET. So let's start with the very first question from subject, which is a 1 mark MCQ question from instrument transformers, current and potential transformer. Question number 23 in the master question paper, GATE 2022 electrical engineering, is as follows. Question number 20 is question number 23. 1 mark MCQ. A table is given, which lists the 2 instrument transformers and their features. Table, which is given as table lists 2 instrument transformers and their features. And the table is given as one of the columns is just below that current transformer, CT, potential transformer, ET. ठीक है, कुछ इसको कर दिया हुआ है, उधर ऑप्शंस में प्राइमरी is connected in parallel to the grid, Q is given as open circuit secondary is not desirable, primary current is the line current, and this secondary burden affects primary current. The 2 columns दिए हुए टेबल में XY PQRS and the options are given as you have to match X and Y with PQRS. Like options are A match, right? X to Y, sorry, X to PQ, Y to RS. Option B, X to PR, Y to QS. Option C, X to QR, Y to PMS. Option D, X to QS and Y to PMS. तो सॉल्यूशन पे आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टू सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. So, 2 instrument transformer given as we all know, current transformer, potential transformer. Current transformer, the symbol is CT, symbol is this. Okay. What does CT do basically? It measures the line current, it steps down line current and measures it. So the line primary current is line current X, and open circuit secondary is not desirable in case of CT. As you all know, if the secondary is open circuited, then high voltage will be induced in the secondary. high voltage generate induced over secondary, so
टाइम्स कर देगा वाइंडिंग को, सेकेंडरी वाइंडिंग सिटी में, तो एक्स मैचेस विद क्यू एंड आर, ठीक है। प्राइमरी again is line current. In city what we have, the primary will consist of one turn or bar, 1:x. Second will consist of x turns. X is much greater than that. Turns ratio. Time is to second. Voltage is step down, so current is step down. This happens in case of CT. Okay. Now let's move on to potential transformers. PT. Let's discuss about potential transformers. PT. Potential transformers has the reverse happens. The current, the voltage is step down, current is step down. Like symbol is this one. Right. This is the line, the grid. And it is current parallel to the grid, as you can see. This is the low voltage that we measured. So primary is current parallel to the grid. It's current parallel. Okay. So as the voltage step down, translation is x is to 1. X is much more greater than 1. So voltage step down. So for measurement purpose and for protection also. Measurement and protection. Both. Primary is current parallel to the grid, as you can see. It's current parallel. Okay. Like this is it's taken. So this is the grid. So it is connected in parallel. This is connected in line. This is potential is connected in parallel. And secondary burden, whatever you connect here, that will draw secondary current. A component of that will reflect in the primary. Secondary burden will draw secondary current, and a component of that will be reflected in primary, so it will affect the primary current. So secondary burden affects the primary current. This is a potential transformer. When it is a current transformer, secondary primary current is line current, secondary current is the step down version of line current. And open circuit is not secondary is not visible, high voltage is induced. Primary current is line current. It is a potential transformer. Secondary burden affects primary current as explained, and it is connected parallel to the grid. So potential transformer Y matches with इसलिए मैच करते हैं P और S के साथ. These are explained. Very short, but these are the very basics of conventional transformers. We will go through it in detail. I have tried to explain whatever is required to solve this question, and in general also I tried to give an idea. So the correct answer is X matches with P, Q and R, and Y matches with P and S. Option C. I will explain the basics of instrument transformers and their features, unit symbol and reference ratio. ये सब वगैरह मैंने डिस्कस कर दिया. आशा करता हूँ समझ गए होंगे. I hope it is clear. If you still have any doubts or queries, please feel free to ask in the comment section. So, hello viewers, a very warm welcome back to Reflux in this series of Day 224 Electrical Engineering Solutions from the subject Electrical and Electronic Measurements. Moving on to the next question in this series of Day 224 Electrical Engineering Solutions from the subject Electrical and Electronic Measurements. Question number 50 in the master question paper. It is based on 2 wattmeter method. It is a 2 marks in any day numerical answer to the question. Question number 50 in the master question paper is as follows. 2 marks numerical answer is given. The circuit is given like this. Current coil.
माइनस पोलैरिटी कुछ ऐसा दिया हुआ है प्लस माइनस और प्लस माइनस पोटेंशियल कॉइल हो गई, ये करंट कॉइल हो गया, ये पोटेंशियल हो गया और दूसरा ये पोटेंशियल कॉइल हो गया, ये करंट कॉइल हो गया, माइनस प्लस एंड प्लस माइनस. This wattmeter reads W1 and this one reads W2. So, and the impedances are given है Z1 Z2. ऐसा दिया हुआ है सर्किट, ठीक है. तो it is given in the question that the wattmeters W1 and W2 are ideal. जनरली अज्यूम किया जाता है. और पूछा गया Z1 इक्वल टू, अच्छा सोर्स दिया हुआ है 400 वोल्ट सोर्स फेज सीक्वेंस R Y B ये दिया हुआ, और Z1 दिया हुआ है 50 एंगल माइनस 90 ओम एंड Z2 भी दिया हुआ है कुछ 200 एंगल माइनस 30 ओम, राइट. तो ऐसा कुछ दिया हुआ है और हम लोग को फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन the readings of W1 and W2 inverse. Readings of W1 and W2 inverse. That could decimal places, rounded to 2 decimal places. Okay. ठीक है. So let's move to solution पे आगे बढ़ते हैं. हमें पहले वोल्टेज को लिख लेते हैं. फेज सीक्वेंस दिया हुआ है यहाँ पे RYB, ठीक है. RYB के हिसाब से हम चलेंगे तो VRY हो जाएगा. Let's say create the reference 400 volt. VYB is equal to 90 degree 120 degree line minus 120 and VBR is 120 degree leading. तो ऐसा कुछ हम लोग लिख सकते हैं. फेज सीक्वेंस दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग ये लिख सकते हैं दिस वोल्टेज विल मेट इन दिस फॉर्म फेजर एंड या सो लेट्स गो बाय मेजरिंग रिकॉर्डिंग द वाटमीटर रीडिंग्स वन बाय वन. तो पहले W1 का देख लेते हैं. लेट्स प्रोसीड. व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वाटमीटर W1. W1 क्या हो जाएगा? W1 हो जाएगा, इसमें लाइन करंट क्या फ्लो करेगा? IR, और वोल्टेज क्या होगा? R और B का, दिस प्लस दिस माइनस RB. तो VRB IR cos फाइव दोनों के बीच का एंगल है. VRB क्या हो जाएगा? माइनस VBR. माइनस मतलब you will add 120 degree or subtract 120 degree phase. So 400 angle 120 minus 180. Write it. 400 angle minus 60 degree. ये RB हो गया. IR क्या हो जाएगा? ये अप्लाई Kirchhoff's current law KCL over here. You will get what? IR equal to VRB, voltage across this impedance, VRB by Z1 is this current, it is VRY by Z2
वी आर के हम क्या निकाल लें 400 एंगल -60, Z1 क्या हो जाएगा, ये 50 एंगल -90। सिमिलरली वी आर वाई क्या हो जाएगा 400 एंगल 0, और वी Z2 क्या दिया हुआ है 400 एंगल -30। इसमें कटेगा 8 से -960 -90 इज प्लस, -60 plus 90 is 30 degree. Same here, this is cancel by a factor of 2. So 0 minus -30 is 30. So these are in phase, 30 here and 30 here. 8 angle 30 plus 2 angle 30. Right? This one looks at 10 angle 30 degree ampere. तो VRB का क्या फेज है -60, और IRB का फेज है 30। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, VRB क्या हो जाएगा 400, IRB हो जाएगा 10 cos 30 minus -60, that is 90 actually, 90. So cos 90 is how much, 0, W1 is 0, right? And W2 will be what, W2 क्या हो जाएगा, W2 क्या मेजर करेगा, IY टाइम्स पोटेंशियल कॉइल क्या मेजर कर रहा है प्लस Y पे है, तो VYB IY cos 5, VYB is what 400 angle -120 degree, and IY is what, IY कैलकुलेट कर लेते हैं इधर भी, IY हो जाएगा क्या VBR, this is open ideal wattmeter, so potential coil has infinite resistance, so this will not allow current, so all the current will flow through here, तो यहाँ से निकल जाएगा क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट वोल्टेज क्या हो जाएगा VYR by Z2, VYR by Z2, VYR by Z2, VYR क्या हो जाएगा माइनस VR1 माइनस 400 एंगल 0, 400 एंगल 180 भी लिख सकते हैं, और Z2 क्या हो जाएगा, क्या दिया होगा 200 एंगल -30, so what we can write is -2 angle 30, or if we subtract 180 degree phase we get 30 minus 180, so it will be 2 angle -120 degree in here. ये हो गया IY का कैलकुलेशन, ठीक है। ये IR कैलकुलेशन है, IY कैलकुलेशन, इसमें क्या आ गया 2 एंगल -120, VY में हम लोग क्या निकालोगे 400 एंगल -120, 400 into 2 into cos of what is the angle -150 and -120, so -120 minus -150, so it will be 800 cos 30 degree, cos 30 degree as you know is √3/2, so it will be 800 into √3/2, 400 √3 into 6 and 1.7 if you put 6 to 92.8. Now the reading of wattmeter W1 is 0, W2 is 692.8 watt. It is asked क्या पूछा गया है magnitude of difference between readings of W1 and W2, तो W1 minus W2 का mod हो जाएगा 0 minus 692.8, या फिर W1 minus W1 का mod ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो आंसर हो जाएगा इसका 692.8 वाट। वाट में पूछा है कनेक्ट अप टू 2 डेसिमल, 1 डेसिमल में चलेगा, रेंज ऐसा किया जाएगा इट विल कवर, सो वी कैन राइट द आंसर इज 692.8 नोट्स। तो बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, आप देख सकते हैं मेथड बहुत ही आसान है एक्चुअली। 2 वाटमीटर दिया हुआ, दोनों के पास जो वोल्टेज है और जो पोटेंशियल के कॉइल के पास, दोनों वाटमीटर के
करंट कॉइल से जो करंट फ्लो कर रहा है ये तो हम लोग को डिटरमाइन करना होता है। तो ये हम लोग अगर दो को डिटरमाइन कर लेते हैं तो हम लोग फिर तो वाटमीटर का मेथड होता है पावर मेजर करने का, एक्टिव पावर मेजर करने का, वो हम लगा देते हैं डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला वोल्टेज इनटू करंट इनटू कॉस ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैट इज पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर एंगल, सो when measuring we are noting or we are observing which voltage is which the voltage for the wattmeter across the potential coil is what we are identifying that, जैसे W1 के लिए हो गया VRV, W2 के लिए हो गया VYB, करंट कॉइल में क्या करंट फ्लो कर W1 के थ्रू IR, W2 के थ्रू IY। तो जो हम लोग नोट कर लिया, फिर फेज सीक्वेंस दिया हुआ उससे हम लोग वोल्टेज लिख रहे हैं, उसके बाद इम्पीडेंसेस का वैल्यू दिया हुआ उससे हम लोग करंट लिख रहे हैं, IR IY निकाल दिए उसमें पुट कर दिया और कोसाइन ऑफ द एंगल हम लोग डाल दिए उसमें वैल्यू, इससे हम लोग को W1 आ गया 0, W2 है 690.8। So after we got W1 and W2, just to take the difference, magnitude of difference, that is the modulus value. So we get the answer very simply as 690.8 watt. So I hope it is clear, the solution procedure and the calculation steps. I have tried to explain in great detail, but if you still have any doubts or queries, feel free to ask in the comment section. And that's all for this video. And for the subject electrical and electronic measurements, only two questions came. This is the second question of 2 marks, numerical uncertainty. So that's all for this subject. I hope you got benefited by watching it, and thank you for watching. Please share it with fellow aspirants if you found it helpful. That's all for this video. Thank you.